Hello guys, so this is the new thing which is started by US and it's gonna affect your Google Adsense account. So if you don't fill the information, they're gonna charge you like around 30%. But if you follow these instructions, you can save up to 15%, and you have to fill this form which I'm gonna show you shortly, and some translation for my Indian viewers. यूएस ने एक फॉर्म भेजा है अभी जो आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप यूट्यूब का बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर आपने ये टैक्स फॉर्म नहीं भरा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 30% तक आपकी इनकम कट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो भी पैसा या क्लिक्स आपको यूएस व्यूअर से आ रही होंगी ना, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स लग जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इसको भरना कैसे है और ये इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी। ये एक अकाउंट है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस पे दिखाऊंगा कि भरना कैसे है आपको। So guys, this is like a temporary account. I'm just going to show you how to fill the information step by step. So if you have any questions, you can ask me anytime. Okay, so once you log in your Google Adsense account, you will see this message: important, check if additional tax information is required from you. All YouTube creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are accurate. So this is how you gonna get this message. So you can fill the form by clicking it here, or you can check your notification and you see here important checks, same details, and you can click here also. So let's go and start doing step by step. So here you see how it says to get payouts from Google, make sure to provide your tax information. This will take a few minutes. So it's from United States, and here you have to click add tax information. And it's very important to fill this information, otherwise they're going to deduct your money. I'm just going to show you the temporary stuff, so it's easy for you to fill up later on. So this is the first thing. What type of account is of Tarsing? So it's an individual account or non-individual account. So you can check here what sort of account you are holding. So अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अकाउंट है तो नीचे का करेंगे। तो लेट्स से इफ Tarsing is individual, so let's click individual account and then next. Are you a citizen or resident of United States? आप यूएस के सिटीजन हैं या रेजिडेंट हैं, वहाँ रहते हैं, तो आप करोगे नो। अगर हो तो यस। So this is the text. Select W8 text form type. Based on your previous select answer, W8 form is needed. So there are two options. One, if you're individual, not living in US, so it's non-US individual, so you have to click here as I'm individual. And if you have a business entity or organization or two people are using account, you can click here. So but for me, I just click this one. तो अगर आप अकेले इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ऊपर वाला क्लिक करोगे and start your form.
I'm not gonna fill the wrong details here because I don't want to line up गलत भर के कुछ भी ब्लॉक करने से अच्छा सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको दूँ ताकि आप कैसे भरोगे। तो टैक्स आइडेंटिटी, सो यहाँ पे आपका अपना नाम होगा जो आपने एडसन अकाउंट पे पहले भरा है, वो आपको ईजिली चेक कर सकते हो आपने कौन सा एड्रेस भरा है वहाँ पे। आप कुछ भी अलग से नहीं भर सकते, यू कैन नॉट मेक आउट एनी एड्रेस because if you fill a wrong address, this form will not be accepted by the US government. तो यहाँ पे वही एड्रेस आएगा, you have to fill the same address which is in your Google Adsense account. So your name, यहाँ पे कुछ मत भरो, this is only अगर आपका अकाउंट कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और तरीके से चला रहे हो, इस पर अपने चैनल का नाम नहीं भरना आपको, ठीक है। सो लेट्स से अवतार सिंह, कंट्री ऑफ रेजिडेंट, आप इस पे भर सकते हो इंडिया, और जो आपका जहाँ का भी चैनल है, सो वेर एवर यू बिलोंग टू, इट कैन बी कैनेडा, US, wherever, Australia, so I'm taking it as India. So all my Indian viewers, if you're filling up your country of citizenship is India, you can fill your PAN number. अपना पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे भर सकते हो। ये काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला स्टेप है, तो बिना टेंशन लिए इसलिए आपको इजी वे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर भरना है। तो जो भी आपका पैन होगा वो आप यहाँ पे भर सकते हो, और ये आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर इन कैनेडा, तो आपका जो टिन नंबर वहाँ पे होगा वो आप भर सकते हो, या सिन नंबर होगा तो वो भर सकते हो, एंड देन यू हैव टू पुट नेक्स्ट। If you click this one, it will say permanent resident address is a PO box or in care of address. You will be required to submit additional documentation. So you don't need to click this and then you can fill address there. You have to fill a correct address. If you fill it wrong, it will not accept. But for me, I'm just showing it to you. Temporary भर रहा हूँ तो मैं सिर्फ कुछ भी भर के दिखा सकता हूँ आपको। Check mailing address as same as permanent resident address. Okay, and then you have to click next. Before doing that, let me remind you again, you have to fill the correct address here. Otherwise, your form will ask for another documents. State required. So it's in Punjab. Next. So here it's showing you step by step. It says address, your registered address on the Google Adsense account. And if it's a permanent address, you don't need to fill it anything else. Just you can click and say it's a permanent resident address. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So now here is a trick. सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जो टैक्स रिबेट मिलने वाला है ये आपकी US के साथ जो आपकी कंट्री की ट्रीटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, let's click India, and India has a treaty. So once you come here, you have to click all these blocks. So you click this one, and then it comes to Article 7 and Paragraph 1, and this goes to 0 reduce rate and 30%. So you have to click 0. Click. Second is the motion pictures and TV. Click.
Article 12, 15%, 30%. So now I want to give you an example. So in India, if you pick India, it says 15% reduced rate. So you have to click 15% if you are in India. But let me take you a little bit back and show you to other viewers who are watching from other places. For example, if you are in Canada, and then Canada, okay, so another thing is you have to find your country in this list. So that means this country has a treaty with US. So I put the Canada here. I'll show you something here. So Article 7, reduced rates, same. When you reach here, this one, Article 12 and paragraph 2, see the difference here. So it says 10% and 30%. So when you select India, it says 15%. So I guess different countries has a different percentage rate. India select करोगे 15% डिस्काउंट है, रिड्यूस रेट्स हैं जो, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज करते हो तो वहाँ पे 10% है. बट ये आपकी सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, वो आप वही सिलेक्ट करोगे जो कि आपने अपने एडसन अकाउंट में भरा होगा. फॉर एग्जांपल अगर इस पे इंडिया है तो यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे 15 हो जाएगा. क्लिक दिस, अदर कॉपीराइट्स, दिस 15%. A foreign TIN is required to claim tax treaty benefits. Please add a foreign TIN or step 1 tax identity. हाँ, ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर आपको डालना है, अगर आपको चाहिए क्लेम 15%, तो आपको मैंने जैसे बोला था पहले कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना इफ़ यू आर इन इंडिया. अगर कहीं बाहर से फिल कर रहे हो देन यू हैव टू fill your TIN number, और Canada है तो SIN number. So all different sort of. Next. I guess it will not go ahead until you fill the information. I'll show you the form. So you have to fill that PAN card number from India. But I'm selecting right now no, I don't need any tax treaty. So I'll just go with the no. So then I don't need to fill all these 3 blocks, just to show you guys, because I don't want to go back and fill. But I can show you also, doesn't matter actually. So I don't remember any, let's say this, and sort it. After you fill all the information, you have to check here your name, your country, your address, treaty, yes, no, how you select all the percentage, reduced percentage. This is the form which you need to click here, and you can click here also, and it will open in a bold, and you can check all the information like this. So whatever information you put it will come in this form like this. Okay, next. Certification, your legal name. Yes, I'm the person listed in the signature section. If you're filling it by yourself, अगर आप खुद भर रहे हो तो ये क्लिक करोगे, अगर किसी और से भरवा रहे हो तो वो ये क्लिक करेगा. ठीक है, जब हम नेक्स्ट करेंगे
तो ये 6 पॉइंट ओपन हो जाता है यहाँ पे, एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट। तो इसका क्या है, हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी इन identified in the tax identity section performed any activities and services for Google within US. So let's say no. If you did, you say yes. अगर आपने की है US में कोई सर्विस, नहीं किया तो no. No, ये यहाँ पे क्लिक, status change। अगर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से देखिए ध्यान से ज़रा। अगर आपको अभी तक YouTube से कोई भी पैसा नहीं आया, make it easy. If you haven't earned any single penny from YouTube, you have to click here. अगर आप ऑलरेडी पैसे ले चुके हो यहाँ से YouTube से, तो ये आपका सेकंड थर्ड पैसे आने वाले हैं, तो आप ये क्लिक करोगे, इजी। ठीक है, नहीं आए पैसे, इफ़ यू हैवंट गॉट एनी मनी, दिस। इफ़ यू ऑलरेडी गॉट अ मनी फ्रॉम यूट्यूब, देन दिस एंड सबमिट। मेरे सबमिट करने के बाद ये एरर दिखाएगा क्योंकि एड्रेस इसमें मैंने प्रॉपरली भरा नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओ so it says it's approved. Maybe I didn't put any address over there. So whatever address you put, you have to see this approved status. Is as simple as that. Claim, 0%, 15%, 15%, like that. Another thing. So now, quickly, let's say if you fill this form or if this form is showing any error, अगर फॉर्म में कोई गलती है या आपको दोबारा भरना है, एड्रेस समझ नहीं आ रहा, कोई भी एरर आ रहा है, तो आप ये फॉर्म जितनी बार मर्जी भर सकते हैं। सो यू कैन फिल दिस फॉर्म अगेन। सो ये अप्रूव्ड हो चुका है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा सकता हूँ। तो नॉर्मली अगर गलत होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा होगा कि रिव्यूइंग एंड इट्स ऑन, योर पेमेंट इज़ ऑन होल्ड, यहाँ पे अप्रूव नहीं आएगा। तो अगर आपको दोबारा भरना है तो सबमिट न्यू फॉर्म, स्टार्ट न्यू फॉर्म, and then again you have to log in. Next. I guess once you fill the form, you cannot go back. Okay, only in the case of if it's error or something, I guess then you can click here. There's some delete button comes here, so it's not here. So I guess once you fill it, you cannot redo it. Even if I say submit new form, it's not showing. Okay. If you have any questions regarding the form filling, you can fill it again, and then later on you can just refresh or cancel, and dismiss. So dismiss. So these are the old, so you will not see any new notifications, so your account will be okay. If you have any question, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो step by step मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ. I'm more than happy to help you. Just write down in the comment box or email me. Right, guys, enjoy, save your money. Thank you. Bye-bye.